Welcome to the Mahatma Gandhi Institute of Technical Education and Research Center. In 2004, a national level institute AMGITA has been started in the field of engineering and technology as per guidelines of All India Council for Technical Education AICTE New Delhi. AMGITA is approved by AICTE New Delhi, Gujarat State and affiliated to Gujarat Technological University Ahmedabad, which is also known as GTU. Our goal is to be an institute of generative ideas so that we remain relevant to our society. The AMGITA has always been an organization on move with continuous effort on improving its processes and to maintain its relevance to the Indian science scenario, with adding new programs in its programmatic portfolio. We strongly believe in overall development of students, so for that we provide them a different platform like state level tech fest, project fair, different sports activity, which helps students to teach teamwork and problem solving skills to get physical health benefits, boost self esteem, and reduce pressure and stress for prove their skills in distinct area. So, students, welcome to the lecture of electrical measurements and measuring instruments. Myself, Professor Gaurang C. Patel from Mahatma Gandhi Institute of Technical Education and Research Center, Navsari. So, students, today we are going to study about the chapter number 3, that is measurement of parameters. Okay, and we will uh, cover these two topics in that particular lecture. Okay, so these are the points to be covered in this lecture. First point, that is explain the methods of measurement insulation measurements, or explain the methods of in measuring the insulation measurements through the मेगर. So ये question दो तरह से आपको एग्जाम में आ सकता है. Either it is asked by the explain measure and how the measurement is measured through the measure or working of the measure, and second, that is the state the limitations of Western bridge and define quality factor with reference to इंडक्टेंस. सो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में आता है, स्पेसिफिकली जो क्यू मीटर वाला क्वेश्चन है वो. सो दिस टू क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू बी कवर्ड इन दिस video lecture session. So in first video lecture I will try to explain you this first question in depth, and in second in same uh, same chapter, for the same chapter I will make another video, that is lecture number 2, that in that lecture I will cover this state the limitations of Western bridge and define quality factor with the reference to inductance. Okay students, so we will begin with the first uh, explanation of that how the maker is working and how what is the principle of maker. Okay. Okay students, so today what we are going to start, we are going one very important question, and it was asked so many times in examination. So uh, we will start with the question that is asked so many times in GTU examination, that is the explain the method for measurement of insulation resistance. Okay, so here we are discussing what is the method of measuring the insulation resistance and why we need to measure the insulation resistance. Okay, so we will start with the answer, that is the instrument that what we are going to use to measure the resistance, it is a megar. Okay, so it is a well known instrument, megar, and megar is an instrument used for the measurement of high resistance and insulation resistance. It consists of hand driven generator and direct reading true ohm meter will shows the electric connections of the megar. I will show you through one animation as well how the megar is going to be work. And for the megar, some of the statement is given over here, that is the magnetic field for both, that is generator as well as meter, is provided by the permanent magnets, and the moving system of megar consists of three coils: current coil, pressure coil, and compensating coil, which are mounted rigidly on a pivoted shaft, which are free to rotate, cover a C-shaped iron core. So students, यहाँ पे ये जो explanation है हम एक animation through देखेंगे भी कि भाई कैसे मेगर वर्क करता है, एंड वी विल सी हाउ इट विल गोइंग टू बी वर्कड एट ऑल. ओके, सो आई विल जस्ट स्टार्ट
you that animation for you. Just a moment. Mega is used for measuring the insulation resistance. Jo students, so here that is the Mega. It is look like that. It is having one handle, and when you just a moment, someone tries to enter. Okay, so that's how it is look like. You can see there is a screen. You can see over here. It is the block diagram or circuit diagram of the Mega. You can see over here, which is having N and S magnet. यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक N magnet लगा हुआ है और यहाँ पे S magnet लगा हुआ है. In between there is a two coils are placed. There is coil A and coil B is given over here. It is a DC generator, and with this DC generator there is one handle is given here, that is known as a crank handle, and one clutch is given there. So when you rotate this handle, so it will produce the DC voltage, and this DC voltage, it will give you the whatever the measurement of resistance it will give you to this scale. So over here that is a scale is given, that is 0 to infinity scale is given over here. So students, how it will be worked, I will show you with just with this animation. So over here you can see the armature of the generator is rotated by the hand driven crank lever. So here there is the armature of the generator, and which is rotated by this hand driven crank lever. Now this is the clutch. You can see over here ये clutch है. Now the clutch mechanism is designed to slip at a predetermined speed. So when this facilitates the generator to maintain a constant speed and hence the constant voltage while testing. So ये क्लच किस लिए दिया हुआ है कि भाई उससे हमें एक कांस्टेंट स्पीड मिलती है और उससे हमें कांस्टेंट वोल्टेज मिलता है जब हम उसका टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं. So now we will move, that is the two coils A and B, that is this is the coil A and this is the coil B, that constitute a moving coil voltmeter and an ammeter. One is the moving coil ammeter, this is your ammeter which is connected in series with the generator, and this is the voltmeter which is connected with the parallel with that particular generator. So these both are combined to form one instrument. So these two coil will form one an instrument. So over here this is the X, which is also known as the hot terminal, and the hot terminal of the equipment whose insulation resistance is to be measured is connected to the testing terminal X. So student, जिसका भी हमें इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजर करना है वो हम यहाँ पे टर्मिनल X के साथ ज्वाइंट करेंगे. ओके, और दूसरा टर्मिनल यहाँ पे ग्राउंड किया हुआ है. सो द हॉट टर्मिनल ऑफ द इक्विपमेंट हुज इंसुलेशन रेजिस्टेंस हैज टू बी मेजर्ड is connected to the testing terminal X. Now you can see students, that is the terminal Y, that is terminal Y is connected to the body of the equipment which is generally grounded. इस terminal को equipment की body से connect किया जाता है और वो generally ground किया हुआ होता है. Now you can see in the animation, when the crank handle is rotated, a voltage is generated in the generator. अब ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो crank handle है
वो रोटेट हो रहा है। जैसे वो रोटेट होगा तो क्या होगा कि आपका जो, ये देखिए आप इस एनिमेशन में देख सकते हैं कि ये हैंडल जैसे रोटेट होता है तो जनरेटर में क्या होता है, वोल्टेज जनरेट हो रहा है। ओके, नाउ द जनरेटेड वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द वोल्टेज कॉइल ए। सो जो भी जनरेटर में वोल्टेज जनरेट हो रहा है दैट विल बी अप्लाइड टू द कॉइल ए। तो आप देख सकते हैं कॉइल का कनेक्शन, इट इज द कॉइल ए इज गिवन ओवर हियर एंड R1 resistance in between that. This voltage is applied to the coil A and it is connected with the generator in such a fashion. Okay, now you can see, now you given the voltage to the coil A, it is also affected to the coil B. You can see in the animation. So when you generated the voltage and given to the coil A, it will be of it, this magnetic field is affected to the coil B, and this coil B is also, you can see when the terminal X and Y are free initially, so current flows through the coil B. So now initially terminal X and Y that is free. Okay, so that's why if we are applied the voltage at coil A and current is moving going past towards the coil B, so it is free initially and no current flows through coil B. यहाँ पे कोई भी कनेक्शन नहीं होगा तो coil B में पहले कोई भी करंट पास नहीं होगा जब हम यहाँ पे coil A में वोल्टेज अप्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है तो फिर coil B का जो है वो पाथ कंप्लीट नहीं हो पाएगा। क्योंकि यहाँ से अगर कनेक्शन होगा, यहाँ से अगर इसमें रेजिस्टेंस ये जो है, ये रेजिस्टेंस R2 के थ्रू जो भी कनेक्शन है वहाँ से वो कनेक्टेड होगा। अगर वो कनेक्शन नहीं होगा तो फिर क्या होगा कि ये जो करंट है वो पास नहीं होगा अगर कुछ कनेक्ट नहीं किया हुआ है तो। ओके, सो नाउ, so this current is passing in that way. So the torque produced by the coil A rotates the moving element to show infinity. So at that time जो भी टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, यू कैन सी इसमें तो कोई मोमेंट नहीं होगा क्योंकि कोई कनेक्शन किया नहीं है। अब कॉयल ए में तो करंट यहाँ से डिलीवर हो रहा है, यहाँ से पास हो रहा है, तो उसके वजह से टॉर्क प्रोड्यूस होगा। और वो टॉर्क जो प्रोड्यूस हो रहा है वो आपको क्या इंडिकेट करेगा, इट विल indicate with this help of pointer, it will indicate the infinity. ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये infinity अभी आपको दिखा रहा है क्योंकि जो भी टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो यहाँ पे उसको, ये जो पॉइंटर को है वो infinity की तरफ ले जाएगा। नाउ अब बात आ रही है टेस्टिंग की कि भाई हम इंस्ट्रूमेंट को टेस्ट कैसे करें। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द टेस्टिंग द इंस्ट्रूमेंट स्टूडेंट, सो यू कैन सी ओवर हियर that is while testing the terminal X and Y are connected across the terminal. Okay, so this is the terminal X and this is the terminal Y, you can see, and it will connected across the terminal। ये जो भी आपका मशीन है, जो भी मोटर है, उसका वाइंडिंग का अगर हम रेजिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो उसके अक्रॉस में इसको कनेक्ट किया जाता है। नाउ यू कैन सी व्हाइल टेस्टिंग द टर्मिनल एक्स एंड वाई आर कनेक्टेड अक्रॉस द टर्मिनल एंड बॉडी ऑफ द मशीन ऑफ मेजरमेंट। ओके, सो उसको इसके टर्मिनल के अक्रॉस में और एक का कनेक्शन होगा उसकी बॉडी पे, विच इज इन दैट वे। ओके, यहाँ पे एक टर्मिनल पे लगा है, ये दूसरा जो है इस टर्मिनल के अक्रॉस में लग गया, आपने देखा है यहाँ पे, और एक जो कनेक्शन है ये यहाँ पे बॉडी पे लगाया गया है। नाउ यू कैन सी व्हेन जनरेटर पहले यहाँ पे कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं लगा हुआ था, देयर इज no instrument that is connected for measuring the resistance. Now this is the symbol of that machine that we are going to interested to measure the resistance, and machine is connected in between this terminal. You can say student, this machine is connected in between terminal X and terminal Y. So now we can say that now if we rotate this generator, whatever the voltage is generated, it is passing through this R1 to the coil A। ये resistance R1 थ्रू के साथ थ्रू coil A में पास होगा,
उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी वो अफेक्ट करेगी कॉयल बी को। अब कॉयल बी में हमने क्लोज पाथ प्रोवाइड कर दिया है यहाँ से। सो जो भी करंट है वो थ्रू द रेजिस्टेंस यहाँ से इस मशीन में एंटर होगा, और वॉट एवर द इंस्ट्रूमेंट रेजिस्टेंस दैट विल बी deflected, and this current is passing in that fashion, and this coil you will be indicated. Just I will show you. Now the current passes through the deflecting coil B. So current will passing through the coil B. पहले जब यहाँ पे कनेक्शन नहीं था तो उसमें से कोई करंट नहीं पास हो रहा था। Now you can see, so इस तरह से आपने देखा कि ये यहाँ से भी करंट पास होगा, यहाँ से सीधा मशीन में आया, फिर यहाँ से कॉयल बी थ्रू गया, और ये जो पॉइंटर है वो इन्फिनिटी पे था, इन्फिनिटी से यहाँ से हट के इस तरफ ये आ रहा है। नाउ यू कैन सी द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय कॉयल बी। कॉयल बी ने डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस किया है क्योंकि उसमें से अब करंट फ्लो हो रहा है। नाउ कॉयल बी इंटरेक्ट्स विद द टॉर्क ऑफ कॉयल ए एंड रोटेट्स द मूविंग एलिमेंट ऑफ इंडिकेट द रेजिस्टेंस वैल्यू। तो अभी इस कॉयल बी का और कॉयल बी का टॉर्क है वो कॉयल ए के साथ इंटरेक्ट हो रहा है, और उसकी वजह से ये जो एलिमेंट है वो रोटेट होगा अकॉर्डिंग टू दैट टॉर्क, एंड दिस पॉइंटर विल कम फ्रॉम द इंफिनिटी टू द पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस। अब जो भी वैल्यू हमें मिलेगी वो क्या होगी, हमारे मशीन का रेजिस्टेंस हमें मेजर करके देगी। So you can see in the animation over here how it will rotate and how the torque will be produced, and according to the resistance this pointer is going to be deflected and it will give you the value of resistance. So I hope you can understood how the Megger is working through that animation picture. Look at this, current is passed and this torque is produced. So that's how it is going to be operated. Okay, so once again I will just play you the whole video, so you can, ये जो फिगर है यहाँ पे कोई भी इंस्ट्रूमेंट अभी लगा नहीं है मेजर करने के लिए रेजिस्टेंस। अब ये जनरेटर और क्लच आपको दिख रहा है। ओके, फिर क्या होगा कि आपका जो हैंडल है उसके थ्रू हम उसको रोटेट करेंगे। पहले ये दिखा रहा है कि भाई कोयल ए और कोयल बी इस तरह से प्लेस की हुई है इन बिटवीन पोल एन एंड एस, एंड देन दिस इज द टर्मिनल एक्स, जहाँ पे आपको जो भी मेजर करना है इंस्ट्रूमेंट उस वहाँ कनेक्ट करना है इन दोनों टर्मिनल के बीच में। अब जैसे ही आप इसको घुमाएंगे उसके हैंडल को, व्हेन यू रोटेट दिस हैंडल, then initially that current is passed through the resistor R1 through the coil A। अभी coil B पे उसका कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, तो पॉइंटर भी आपको इन्फिनिटी दिखाएगा। नाउ हम देखेंगे कि हमें इस मशीन का इंसुलेशन रेजिस्टेंस, इसका जो वाइंडिंग का इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजर करना है, तो हमें कैसे कनेक्शन किया। फिर वापस उस हैंडल को घुमाते हुए हम देखेंगे तो अब करंट पास हो रहा है कॉइल बी से। अब हमारे पास दो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहे हैं, दैट इज टू टॉर्क इज प्रोड्यूस, एंड ड्यू टू दिस टू टॉर्क वी विल गेट द मोमेंट ऑफ दैट pointer, and it will give you the, that reading is we consider as the resistance of that particular instrument which we are going to connect it. So this is the Megger and how it is working. I hope you understood very well. Okay, so now over here we will see, that is the theory that we are going to understood how it is going to be work. Okay, so over here students, we can say this is the theory that you can easily read and understood whatever it is going to be work, how it is going to be work. It is I mentioned all to all of you. Still some of the important statement we will going through it now.
we can see over here when the testing terminals L and E, in place of L and E, that is the X and Y we are considering in that figure. So that short circuited through a low resistance and a heavy current passes through the deflecting coil or current coil to produce sufficient torque to overcome the anti-clockwise torque of pressure coil. Okay, so this is the operation is given. You can easily understood by reading the theory once you understood the working of the Megger. So operation is given over here, that is the operation. The resistance under test is connected between the test terminals L and E, and the generator handle is then steadily turned at uniform speed. Now the turning of the handle must be kept up until the pointer gives steady reading. The reading on the scale gives resistance in mega ohms. So this is the operation that we have discussed right now. And what are the applications of mega, students? So applications of mega, that is mega is used for measurement of insulation resistance. While measuring the insulation resistance, insulator is connected between terminals L and E, and the reading of resistance is taken by rotating the handle of the hand driven generator. Okay, now पहला जो उसका जो एप्लीकेशन है वो क्या है, it is used for measuring the insulation resistance. Okay, then second, that is for testing the continuity of the machine winding, कि भाई हमारा जो मशीन का वाइंडिंग है वो उसकी कंटिन्यूटी क्या है. ओके, अगर वो बीच में से ब्रेक हो गई है तो दैट it will be indicated with, if the winding is continuous, Megger will show the zero reading on the scale. तो आपका वाइंडिंग ठीक है, प्रॉपर है, तो वो आपको क्या रीडिंग देगा, इट विल शोज द जीरो रीडिंग ऑन द स्केल. वो आपको स्केल पे क्या दिखाएगा, जीरो दिखाएगा. नाउ मेगर्स आर ऑल्सो यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ केबल इंसुलेशन रेजिस्टेंस. मेगर दूसरे कहाँ पे यूज किया जाता है स्टूडेंट, तो मेगर हम ऑल्सो यूज कर सकते हैं केबल इंसुलेशन रेजिस्टेंस में. ओके, so that's how the megger is going to be operated, and that's how the megger is going to be work. Okay student, thank you. So students, finally, as in every lecture, after completion of every lecture, I will try to give you a message that please remember, turn off the light when it is not required. Okay, so please save the energy, save the electricity. Thank you very much.